alaikum everyone. How are you people? Good. जैसा कि बात करो खास तरह तो electrostatic, that is the topic for today. All right? हाँ मैग्नेट्स खत्म कल उसकी कंक्लूजन हो गई थी. ठीक है बेटा. इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब के सब दे आर जस्ट लाइक अ ट्रेन. जैसे ट्रेन की बोगीज होती है ना, देखिए आपने ट्रेन, किस किस बच्चे ने ट्रेन देखी है? वालेकुम सलाम. जल्दी आ जाओ तुम लोग के लिए आ जाओ आ जाओ. तो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा टॉपिक, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेन. उसकी सारी बोगीज आपस में कनेक्टेड होती है कि नहीं होती है? और अगर सेंटर में से कोई एक उसका हुक निकल जाए फिर क्या होगा? आधी ट्रेन आगे और आधी ट्रेन वहीं पर रह जाएगी. इसलिए बच्चों को समझ नहीं आता इलेक्ट्रिसिटी. ऑलराइट. और ये जो मैं सारी बातें आपको कर रहा हूं और ये सुना रहा हूं, देयर इज अ मैसिव रिसर्च बिहाइंड इट. मेरा जो एडवांस डिप्लोमा था इन प्रोफेशनल स्टडीज ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके से, उसमें मैंने आपका ये वाला एरिया सेलेक्ट किया था कि व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, why the students of O levels they are unable to understand the concepts of electricity. और उसमें मैंने 2 years की रिसर्च की and I got distinction on that research. ठीक है. So electricity आप मेरे से ऐसे ही समझोगे पढ़ोगे जैसे आपको मैग्नेट्स लगे. ठीक है. लेकिन मेरी एक शर्त, just one condition, you will not get absent. The day you will get absent, खत्म होगी तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी. आई एम टेलिंग यू, नहीं समझ सकोगे. मुझे दोबारा से आपको लेके जाना पड़ेगा. ऑलराइट. सो प्लीज एब्सेंट मी. और अगर काफी सारे बच्चों का प्लान है कि सर हम अपना डे पे नहीं आएंगे, तो टेल मी बिफोर एंड में बाकी बच्चों को कुछ और करवा दो, उसके लिए अपने आना करो. दिस इज द प्रॉब्लम. ओके. ऑलराइट. So we are just starting with, नहीं ठहर जाओ, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है उसमें what is involved, what we are going to study, electrostatics, then we are going to see current electricity, then we will see electromagnetism, and then we will have electromagnetic induction. All right, these are the 4 major areas which we are going to study in this topic of electricity. जी बेटा. इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स वाला नहीं पढ़ना? तो बेटा जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद चलेंगे. वी आर जस्ट डिस्कसिंग इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्या क्या पढ़ना है. ऑलराइट. वो हमारे वी विल लेफ्ट विद 2 टॉपिक्स, रेडियो एक्टिविटी एंड एस्ट्रोफिजिक्स. ओके, दैट विल कम आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी. ओके जी बेटा. ये नाउ सपोर्टिव चैप्टर्स, वो चैप्टर्स जो आपने अगर पिछले पढ़े हुए हैं, you need to strengthen those concepts, otherwise let's go. What are those chapters? Word magnet use हो रहा है,
इसका मतलब है मैग्नेट्स का चैप्टर आना चाहिए. ओके, we'll have magnets and support for these concepts. So you must know magnetism. And then one chapter from the mechanical physics, mechanics, that is work, energy, and power. We're going to do today's topic, electrostatic, and we will conclude it inshallah by tomorrow. Okay? Then from Monday we will start current electricity. So by Monday you should know this chapter by heart. What is work? What is energy? Types of energies. Law of conservation of energy. What is power? Formula of power. Everything. मुश्किल है ये कोई, इसको रिवाइज कर लेना. ठीक है, तो उसकी वजह से आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी हो जाएगा. Right? So all these four concepts, they are banking on one another. They are well integrated, very well connected. इसलिए बार-बार ये सारी चीजें दोहरा. ठीक हो गया? Yes, I was waiting for a couple of students to join us, so we can start with today's topic. Again, reiterating the last important thing: don't get absent from these sessions until unless electricity is complete. All right? मुश्किल हो जाएगी तुम लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं. Electrostatic. What do you mean by? We're just going to do the first one. What do you mean by electrostatic? When we say electrostatics, what is the first thing which comes to your mind? Sadiq, what you are thinking? Electricity. Ji, Ali. Current. Then, come on. कोई बता दे यार, कौन सी? Static electricity. Yes, online people, what are you thinking? When somebody says electrostatic, the thing which comes to my mind is a bulb. Sure. मुझे तो बल्ब आता है समझ. अरुबा आपको क्या समझता है? बस नाम ही उसका. कोई चीज देर में नहीं आती. बिजली, करंट, ये वो, डेंजर, साइंस, इंडक्शन. एक एक बताना, ज्यादा नहीं. हैदर, करंट आता है. जी, पीपल ऑनलाइन, योर टर्न प्लीज. बख्तियार, फातिमा, हादिया, उमर, उस्मान एंड खदीजा. Tell me what comes to your mind. What is the first thought which comes to your mind? I'm looking for the wrong answers, not the right answers, please. So do speak. गलत मलत बताओ शाबाश. Electroscope. Very good. इंडक्शन क्या होती है? बताएंगे अभी नहीं. जी, साबिया रहे. Online people, you are so lucky. 1000 बहाने तुम्हें आते हैं. सर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, सर ये नहीं हो रहा था. ये तो इधर बैठे हुए हैं, सिर्फ इनको यूं करके बैठना पड़ता है आपको. राइट, कुछ गलत सलत बता दो बेटा. इंडक्शन. चलो ठीक हो गया, आ जाओ. Actually, this word is made up of two words. Electro क्या होता है? What is electro? Electric, yes. What electric? Current. All right. Electricity. कितने तरह के इलेक्ट्रिक हो सकते हैं? What is the base or root or cause of this electric thing? That is
How many types of charges do we have? Positive and negative. We have positive and negative charge. So all of us can know what are positive charges? We have protons, smallest positive charge is protons. One proton is one smallest positive charge. What is the smallest negative charge? One electron. Shabash. We call them unit positive and unit negative charges. Unit means one. This entire building is made up of bricks. So one unit or one brick is actually the thing. So we call it unit brick. So in the same way, charges, they are the multiple of either positive protons or negative electrons. ठीक है ना? इसके अलावा तो कोई चार्ज नहीं है. इलेक्ट्रो तो समझ में आ गई. It can be either positive, negative. स्टैटिक वही है जो इंग्लिश वाला स्टैटिक होता है. स्टैटिक का क्या मतलब होता है? आदिल, स्टैटिक स्टैटिक का क्या? स्टेशनरी, which is not moving, which is fixed at its place. That is static, not moving. ठीक है? Stationary, etc. मुश्किल था नहीं था ना. So कौन सा चार्ज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? कौन सा वाला चार्ज? पॉजिटिव नेगेटिव. वो क्या कर रहा होगा? स्टेशनरी होएगा, रुका हुआ होएगा. वो मूव करेगा? नहीं करेगा. ठीक है? So the charge which is stationary, static, at rest, we are going to discuss or study that in electrostatics. और जब यही चार्ज चल पड़ेगा, मूव करना शुरू कर देगा, तो क्या बन जाएगा? थैंक यू वेरी मच. करंट. ठीक है? एयर करंट्स होती है, ज्योग्राफी में पढ़ो. वाटर करंट्स होती हैं. तो अगर एयर चल ही नहीं रही, if the air is not blowing, can we say air currents? Current is because of the flow, because of the movement, motion, and opposed to that is static, stationary, not moving. So in this topic, in this area, we are going to discuss charges which are not moving from their places. All right? Basic समझ में आ गया? आओ थोड़ा सा और समझाओ. मुश्किल है, आई नो, घबराना नहीं. ठीक है? और जहां पे नहीं समझ आए बेटा बोलना है, बताना है मुझे कि सर ऊपर से जा रही हूँ. और समझने की कोशिश भी करनी है और क्वेश्चंस भी करते रहना. पीपल ऑनलाइन, स्टे वेरी वेरी अटेंटिव. यू माइट हैव प्लेड विद द प्लास्टिक रूलर इन लोअर क्लासेस. वो सर पे ऐसे रब करते थे और फिर वो जो था क्या करते थे उसके साथ? पेपर के वो सारी चीजें. फॉर्म को भी हम इस तरह से करते हैं हेयर्स के साथ. और वो क्या हो जाता है? रूलर क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है. यस, शाबाश, चार्ज हो जाता है. नेक्स्ट सपोज दिस इज द रूलर. ये आपने इसको हेड पे काफी सारा रब किया, तो यहाँ पर जो पेपर पीसेस थे वो इस तरह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं. तो लेट्स सपोज इस पे कौन सा चार्ज आ गया? ऑलराइट, सादे कह रहा है तो मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव.
it is attracting these paper things. ठीक है, ऐसे कहा कि नहीं था, राइट? अच्छा यार, गौर से देखो, ये रूलर किस चीज का बना हुआ है? पेपर किस चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक इज कंडक्टर और इंसुलेटर. वुड इज कंडक्टर और इंसुलेटर. और आप क्या कह रहे हो? चार्ज हो गए. इंसुलेटर्स चार्ज होते हैं. हाय हाय, ये क्या हो गया? वुड चार्ज होती है हमारे लिए. देखते हो गड़बड़ है ना? चार्ज तो हो रहे हैं क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहे थे, नजर आ रहे थे साफ. ये क्या फिनोमेना है? वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग है ना. आज on the basis of this electricity, we have divided the matter into two classes. One are called conductors, the others are called insulators. What are conductors? They conduct electricity. Insulators cannot. Example: copper, iron, all metals. इनके एग्जाम्पल wood, rubber, plastic, etc. यहां पे क्या है? wood and plastic. और ये क्या कर रहे हैं? चार्ज हो सकता है इस तरफ? नहीं हो सकता. माइंड सेट जब नहीं हो सकता. वो क्यों नहीं हो सकता? इनमें एटम्स नहीं है कि नहीं? इनमें एटम्स. एंड एटम इट कैरीज, this is protons and neutrons. What is the charge over here? Thank you very much. Electrons Negative. revolving here with negative charge. So wood में atoms है ना? That means it contains both negative and positive. कोई ऐसा material in the world जिसमें atoms ना हो, जिसमें charges ना हो? So this conduction and insulation is something else, right? It has nothing to do with this charges. वो देखते हैं उसको, हम अभी बाद में देखते हैं. पहले ये तो समझना है कि मसला क्या हो गया है, right? Sadik is insisting. क्या word का है बेटा? Conductors, they have free electrons. What are free electrons? Free electrons. Free electrons are free. देखो, example. At nucleus of the atom, it attracts electrons. So do we have electric attraction between the nucleus and the electrons? Yes, atoms they do have. So electrons are attracted towards the nucleus because of the opposite charges. ऐसे ही है ना? मैं उसकी एक ऐसे अजीब सी एग्जांपल देने लगा just to make you people understand. कुछ बच्चों के पेरेंट्स they are quite इस तरह से firm. तो they want कि उनके बच्चे शाम को मगरिब से पहले पहले घर में आ जाए, अंधेरा होने से पहले. ठीक है? और अली अगर कभी कभी देर हो जाती है तो बड़ी डांटें पिटती है. किधर रह गए थे, क्यों रह गए? होता है इस तरह से. अच्छा, कुछ पेरेंट्स दे डोंट माइंड दैट. बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, नाउ दे कैन बी ऑन देयर ओन. वो देर से आ रहे हैं, कभी कभी रात भी बाहर रह रहे हैं, जरा केयर फ्री से. ठीक है? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. There are certain materials जिनके nucleus they got a lot of attraction for their electrons. वो उनके electrons के जा नहीं सकते बेचारे. And there are certain atoms, certain materials
या एलिमेंट्स, थैंक यू फॉर दिस व्हाइट, जिनके इलेक्ट्रॉन्स की इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होती टुवर्ड्स देयर न्यूक्लियस व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये इनके इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके अगले एटम में, उससे अगले एटम में दे कैन मूव फ्रीली, दैट्स व्हाई वी कॉल देम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रही है? So materials which have free electrons in them, we call them conductors. और जिनमें नहीं होते, इनके न्यूक्लियस they attract their electrons very strongly, उनको कहीं निकलने ही नहीं देते, we call them insulators. But both of them they contain electrons and the nucleus which is positively charged. समझ आ रही है बात? Insulators, conductors समझ में आ गई? So wood and plastic both are insulators, but they still got charges in them. So what happened when you just rub this part of this portion of the scale with your hairs, this part, it got charged on it. It gets charged because of friction, right? Now, because of the friction, what happened? Electrons, they are either transferred on the other material or they are transferred on the first one. So if positive charge is created here, it means electrons are transferred from here because it was actually neutral. It contained both positive and negative as equals. If this portion had, let's suppose, 1000 positive charge, then it also had 1000 negative charge. I'm just saying it 1000, but it is a lot more than that. Okay? So, out of these 1000, if some of them they are shifted, transferred to the other material, the population of positive will increase. As a result, this thing will turn into positive. Okay? अब बताता हूं अभी तुम्हें है जो मुश्किल हो गया जरा सा। इस कमरे में we have how many boys? 5 boys, 2 girls. अगर मैं इस रूम में से 4 बॉयज को बाहर निकाल दूं, किसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी? गर्ल्स को हमने इंक्रीज या डिक्रीज किया था, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर मूवेबल। कैन वी मूव प्रोटॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस? ठीक है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से मूव कर जाएंगे तो एज अ रिजल्ट इस पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव। एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, समझ रहे हो? बिकॉज पॉजिटिव इज फिक्स्ड, वो तो नहीं चेंज हो रहा। यहां तक बात समझ आ रही है? अब एक और प्रॉब्लम है कि ये इतना ही पोर्शन क्यों चार्ज हुए। देखें, होल्ड ऑन। If instead of this plastic scale, if you were using a metal scale, steel वाला, तो वो चार्ज होता है, वो क्यों नहीं होता? अगर हम उसको बहुत ज्यादा जोर से करें फिर चार्ज हो जाए, हम गंजे हो जाएंगे, लेकिन वो चार्ज नहीं होगा फॉर श्योर। ठीक है ना? क्यों नहीं होगा? देखो उसके अंदर क्या है? free electron. Now, free electrons they play a very vital role here. Let me explain that thing. देखो, free electrons करते क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ कि किसी को याद है वो केमिस्ट्री में you might have read 1 mole of any element. हाइड्रोजन के मोल में कितने ग्राम्स होंगे? उसका क्या है एटॉमिक? वो 1. तो 1 ग्राम हाइड्रोजन विल हैव कितने, वो कितने होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर कितना? 6 पॉइंट, इधर लिखो, इधर लिखो, 6.4202 your 10 is for 23 atoms.
1 मोल में कितने रहेंगे? इट मींस हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितने एटम्स रहेंगे? कैन यू फिगर आउट कि कितना नंबर है? ये 602 के साथ 21 जीरोस है। 2 के साथ 21 में अगर काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कैन यू रीड दिस नंबर? ये कितना? 1 ग्राम। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी हो, 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, लेट्स सपोज, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर? कितने तो होंगे। अब मुझे ये बताओ कि इस डस्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पक्का? और इस कमरे में, और इस पूरे जौहर टाउन में, और पूरे लाहौर में, और पाकिस्तान में कितने, और पूरी दुनिया में कितने इलेक्ट्रॉन? ठीक है। सो अगर मैं उसमें से ट्रिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर सी में से इफ आई जस्ट टेक आउट अ कप ऑफ वाटर, ये वाला पूरे सी में से एक कप निकालूं, उसका लेवल पे कितना फर्क पड़ेगा? थैंक यू वेरी मच। तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं अर्थ में कि अगर आप उसमें से ट्रिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स निकाल भी दो या दे भी दो उसको, नथिंग हैपेंस टू इट। यस, बहुत थोड़े से। ये जो क्लाउड्स होते हैं, आसमानी बिजली, थंडर, ये गिरता है ना कभी कभी बिजली जमीन पर। एक क्लाउड में कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है पता है आपको? लाहौर सिटी, एक एवरेज क्लाउड में लाहौर सिटी 2 इयर्स तक अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकता है उससे, 2 इयर्स। और जब वो जमीन पे गिरती है, कितने ह्यूज अमाउंट जाती होगी एनर्जी की, उसमें तो फर्क पड़ता है जमीन को? कुछ भी नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट? कुछ बात समझ आ रही है? चलो, नाउ कमिंग बैक टू दैट स्टील स्केल। स्टील स्केल के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एंड दे आर फ्री, दे आर फ्री टू मूव। पूरा एक स्टॉर्म राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टॉर्म पूरा, और उधर से इस तरफ आ रही। तो एज अ होल क्या होएगा वो? न्यूट्रल। नहीं समझ आया? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सुबह असेंबली होती है स्कूल में, सारा स्कूल कहां इकट्ठा होता है? इन द ग्राउंड, वन साइड ऑफ द ग्राउंड। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग ग्राउंड? एम्प्टी होता है कि नहीं होता है ना? ब्रेक में क्या होता है? सारा स्कूल दैट इज आउट इन द ग्राउंड, कोई कॉर्नर उसका खाली होता है, इधर से 20 बच्चे भाग के उधर जा रहे होते हैं, तो यहां से जगह खाली होती है भला? क्योंकि और बच्चे इधर आ जाते हैं। तो इसी तरह से स्टील स्केल पे व्हेन यू आर रबिंग इट, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू योर हेड, बट दे आर रिप्लेस्ड बाय द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो रगड़ते रहो, कुछ भी नहीं होगा, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स आके उसको फिल अप करते रहेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज हियर। इट मींस स्टैटिक, स्टेशनरी, ये रुके हुए, they cannot travel to this side, they will remain at this end. That's why we call them which charges? Static charges. ठीक है? नहीं समझ आ रहा? इधर आ जाओ। Let's suppose there are 2 regions. ये डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या होती है? सैंड। और ये क्या है? सी। सी में क्या होता है? वाटर। मैंने क्या किया, एस्कीवेटर होता है ना, वो बड़ा सा जैसे जमीन खोदते हैं, उससे मैंने इसमें चप्पू से आई टेक दिस थिंग, तो दैट क्रिएटेड अ होल हियर। हो जाएगा? वही मैंने पानी में किया, इधर भी हो जाएगा? इधर क्यों नहीं हो रहा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स दाएं बाएं से आ जाते हैं, और सैंड में नहीं होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई उसमें वो होल बना रहता है। इन द सेम वे व्हेन यू रब द प्लास्टिक स्केल फ्रॉम दिस एंड, द चार्जेस फ्रॉम दिस एंड दे आर शिफ्टेड। thus यहां पे क्या क्रिएट हो रहा है?
positive या negative charge है, and it remains in this area, वो आगे कहीं और shift नहीं होगा, ठीक है? समझ आ रहा है static charges? All right. So we are going to study these static charges in electroscope. यहाँ तक कोई question? अभी तक हमने नहीं पढ़ा, अभी हम just making the ground, making you understand what is static electricity. जी बेटा, पूछो. Sir, the negative and the positive charge that will be created on the insulator, it will stay only on its place, it will not travel to the other side. All right. देखो बेटा, free electrons, I told you earlier, they are able to move freely from one point to another, right? But these insulators, their electrons cannot leave their atoms. Okay? So when you are rubbing them due to friction, air friction or surface friction, you are actually giving them energy, and because of that energy, the electrons, they are transferred, resulting in a charge situation. That charging will be either negative or positive. Okay, no? Now, what happened? Let's suppose I have a glass sphere which is mounted on a wooden stand. Now this sphere is neutral. Neutral means it has equal number of positive and negative charges. What if I just bring a rod which is negatively charged? Will it influence the charges on this sphere? We have equal number of positive and positive एक साइड को लेगा नेगेटिव एक साइड. yeah, we need to make one more. All right. So it was neutral like this. We had even distribution of positive and negative charge on it. So we just brought in a negatively charged rod closer to it. What will happen? What do you expect? Okay, you will think about charges right side or left side. All right. Anybody else? Because of this charge rod, do you think anything will happen on this thing? Is it going to create some sort of disturbance here? Similar charges. Do they attract or repel each other? And opposite charges? Attract each other. This is negatively charged rod. You are bringing it closer to this thing. Negative will attract and it will repel. Now, which one of them is able to move? Negative. So negative will start running away from this area. And it will try to go on which side? Yes, away from this charge rod. So away is this area. So we'll have more concentration of negative on this side and positive on this side, because electrons, they have escaped from that area and they have come to this area. So we'll have a sort of a separation of charges here. Kaisa? Positive on this side and negative ठीक है जी.
Sir, it is a metal sphere. Glass sphere. Glass sphere. All right. And this is a plastic one, which is charged. Okay, madam? Charged plastic rod, and that is charged negative. So we'll have this sort of separation of charges. When we will just move away this rod, what is going to happen? Again, neutral will have again the same distribution of charges everywhere. Even distribution. Okay? So this movement of charges, do you think that rod really touched the sphere? We were just bringing it closer. Now, what will happen if we'll have the same sphere, neutral, and we just bring in this charge rod very close to the sphere, very close, but it is not touching it. What do you expect? What will happen? Separation of charges in the same fashion or different? Same. Less or more charges on this? More. Why? As you are bringing it closer. It's just like if we have two magnets, North Pole and South Pole, which are apart from each other. They will have attraction, but less attraction. What if we just bring these two ends closer to one another? What do you expect the strength of attraction will be more in case A or B? Okay, we have the same magnets, but yeah, because we have brought them closer now. Can you figure out the amount of attraction here in this case? Maximum attraction. So as you will bring this rod closer to the sphere, the more separation of charges will take place. Okay? Let's suppose there were two neutral spheres, glass spheres, which were touching each other at this point. Both of them, they are mounted on wooden stands. Nobody is touching them, they are on the wooden stand. So we have glass spheres. Now, they are neutral. What if I just bring in a highly negatively charged rod closer to it? We'll have all the negatives over here. Yes or no? No. We'll have positive on this side And negative on the other side. and negative on the here. यहाँ पे yes. Right? Because of the attraction, positive will remain nearer to it, and because of the repulsion of the similar charges, all the electrons, they will try to move as far away as they can. Okay? So similar charges, they repel, they hate each other. Now, what if in this situation, I just separate these two spheres? I just separate these two spheres in this situation. What is going to happen? This will become positively charged, and this will become, thank you very much. So this positive will evenly distribute.
and this negative will evenly distribute on the sphere. So, did we actually do anything to the sphere to make them charged? We just brought in a charge for closer to them, and these two they charge by themselves. This is called induction. When you are actually not touching them. ठीक है? Induction is not that simple. इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा. इधर देखो बाद में लिखना. Did you touch the rod here? No. You just brought that rod closer to the sphere. घर में जैसे अबू आते हैं कैसी खामोशी छा जाती है. छाती है कि किस वजह से? दहशत नहीं होती, कहीं इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है? So because of the influence of something, if any change is occurring, that is called due to induction. उर्दू के बच्चे जिन्होंने बड़े A grades लिए हैं, can you tell me the meanings of this phrase? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है. लाल नहीं होता, खरबूजा पीला होता है. एक को देख के दूसरा भी वैसा ही हो जा रहा है. देख के, टच नहीं, वो देख के ही हो गया. तो ये देख के जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड ड्यू टू इंडक्शन. इंडक्शन में टच नहीं होता. ठीक है? इंडक्शन में कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? ऑपोजिट. रिमेंबर, यू ब्रॉट इन नेगेटिवली चार्ज रॉड, तो ये वाला सफेद क्या हो गया था? पॉजिटिव. ठीक है? टच मेथड में क्या होता है? If we have the same sphere, it is neutral, and I just bring in this negatively charged rod, and I just touch it. This sphere is touched by this rod. What is going to happen? Transfer of electrons from the rod to this neutral object. Transfer. So this sphere will also turn negative. Some of them will be transferred to it. Negative. So similar charges are occurring here, and in that induction, opposite charges here. Any questions? मुश्किल है थोड़ा थोड़ा. इंडक्शन में ऑपोजिट चार्ज क्रिएट होता है हमेशा. पहले बहुत चेक रहे होते, जैसे अब वो आते हैं खामोशी छा जाती है. This is opposite. All right. आज हमने we have just tried to make the ground. हमने अपना stock prepare किया. I tried to make you people understand what is static electricity और उसमें होगा क्या. Tomorrow we are going to apply this concept, and I'm sure things they will turn more clearer to you. Okay? थोड़ा सा खुद से पढ़ने की कोशिश करना. Any questions? Sir, in induction, we don't need any friction to move the charges. We just bring in an already charged thing to it. So how we can charge the objects, we are going to see tomorrow. Okay? Okay, sir. Any other questions? All right. Okay. Khuda Hafiz. Thank you very much. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.